Hello and welcome everyone in this class of dual nature of radiation and matter. This comes under the modern physics section. So, I welcome you all in this session, and I hope that all of you are good and will be great in your health. Recently, your exams has been completed. So, who will tell me that how's the exam? How was the exam? They went well. How was the exam, Bhagat? Okay. I think result will be not announced. No? It will take time. So is this lectures like enable lectures helps you in your exams? That exam that you have given recently, was they helpful? So in this chapter, let me know in the commenter what is the learning objective of today's class. Not today's class, entirely in this chapter. Electron emission and photoelectric effect. Experimental study of photoelectric. Basically, what we are going to do, no? We take up the light and break it into parts, and then we will understand that how the light behaves. Good. So this dual nature of radiation, especially we are talking about the light. Okay, radiation, light is also a kind of radiation. Okay. So till this experimental study of photoelectric effect and Einstein photoelectric equation, in this term photon, these all are related to the light. Okay. Then we will understand the vice versa. We can have the light as a wave till now. Then we will understand the wave nature of matter, solid, liquid, and gas. Okay, and based on that, division and Germer experiment is there. Okay, so it's a very interesting yet theoretical chapter it is. Got it? Because the numerical expectancy from this portion is less, but theoretical uh, chapter would be very high. And why? Because numerical is very less from this chapter, because the level of numerical that we require to solve these problems, they require a very high level of mathematics. So we will not going into that due to the syllabus obstacles and all. Okay. So let's just try to make this day a very beautiful day on the terms of learning. Okay. So history of photoelectric effect के बारे में we will talk about सबसे पहले. Then electron emission and how many type we can emit the electrons or electron can be emitted. And then the finally the photoelectric phenomena. Now, if I start with the basic thing, what do you think about light? What is light? Just understood in ray optics and wave optics, both the cases we have seen that light is nothing but a wave, ठीक है, which is electromagnetic wave especially, ठीक है ना? But here in this chapter, something different has been happened. Maxwell mathematical theory says that the light is nothing but an electromagnetic wave. And we have a chapter on this electromagnetic wave. This is completely a chapter in 12th curriculum, in the of JEE and NEET. So Maxwell gives this theory about the light or the radiation, especially that the light is a kind of radiation and which is nothing but the electromagnetic radiation, which means electric and magnetic field both are oscillating, and when they both are oscillating and this oscillation travels from one place to another place, that is nothing but the light that we see. Okay, visible light. This is the mathematician, great mathematician of that time. So this type of wave nature he has depicted about light. You can see the blue color
is the oscillation of electric field, and definitely for sure we can say that this is a varying electric field here and varying magnetic field. So both will be vary, and especially we use the term they both are oscillating perpendicular to each other, and this variation is also moving forward. So this is nothing but the wave motion is happening. Okay. This is the electromagnetic wave basically. This is the theory suggested at. Okay. After that, there are two most important observation made in this way, which is Halleck's and Leonard. Okay. What they have include? First of all, Halleck का experiment we will discuss about. What this particular physicist has seen or observed that a negative zinc plate loses charge if exposed to UV light but not to white light. अभी वेव नेचर तो हो गया था. अभी वी विल टॉक अबाउट द वेव. ठीक है. अभी देखो एक इंटरेस्टिंग बात आप समझो. आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सपोज हियर, अभी मैंने एक सरफेस लिया. ठीक है. इस सरफेस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल. अभी तक हमें यही पता. और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत सारी बोल्स हैं. ठीक है. दीज आर बोल्स. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव डिड, आई वांट टू kick out this ball. So what I have to use, I have to use another ball or another object that is solid to remove this ball, or to give a movement to this block or this ball, isn't it? Which means a particle can only transfer a particle from one place to another place because of the collision. ठीक है. एग्री करते हो आप सब? नाउ इफ आई से यू that this is a ball and this is a torch I have, a light torch. ठीक है. I put on the button, the light is glowing. What is the chance that this ball will shift? Is there any chance कि लाइट मैंने जैसे ही ऑन की तो ये बॉल शिफ्ट हो जाए, ऐसा लगे कि लाइट ने इसे टकराया और ये दूर भाग गई? What is the chances of that? So this Holloch's experiment or this Holloch's observation talking about this phenomena, because इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन तो एक बॉल है ना. दिस इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है. और जैसे ही मैं उसे यूवी लाइट में, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो कि अल्ट्रा वायलेट वायलेशन जो है, रे है, वेव है, उस वेव के रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं कि वहां से वो नेगेटिव चार्ज को ब्लो आउट कर रही है. ठीक है. हाउ इट्स पॉसिबल? तब थोड़ा इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ. आप भी अब थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल, हाउ इट्स पॉसिबल. ठीक है. सो दैट इज वाई एक लिंक हुआ जनरेट. ये वाले लिंक नहीं जो हम शेयर करते रहते. द लिंक वाज दैट कि लाइट इज नॉट स्पेसिफिकली वी कैन से एज अ वेव, बिकॉज अगर लाइट वेव होता देन this particular phenomena doesn't take place, never. But it is happening with holots. So then, ठीक है. बट इसमें भी एक स्पेसिफिकेशन क्या थी कि ये नेगेटिव जो जिंक प्लेट थी ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज तो कर रही थी, बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. विच मीन्स अगर मैं व्हाइट लाइट लेता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे यूवी लाइट लिया और लाइट लेता हूँ. वॉइस इज नॉट ऑडिबल. अरे वॉइस तो ऑडिबल होनी चाहिए.
माइट बी सम इंटरनेट इशू ना. अभी ऑडिबल है. अभी ऑडिबल है. पहले ऑडिबल थी ना. गिव मी यस एंड नो इफ इट्स ऑडिबल राइट नाउ. ठीक है. बिकॉज आई थिंक दैट फ्रॉम माई एंड द इंटरनेट इज गुड. ठीक है. हम्म. So what I'm saying that in the presence of UV light, zinc plate losing electrons, negative charge discharge हो रहा है, which means this plate is losing electron. But same UV light को मैं पॉजिटिव चार्ज पे डाल रहा हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा है. And on the negative charge zinc plate also, if I expose it to white light, then also there is no change. ठीक है. Then what is happening? अभी क्रियोसिटी पैदा हो रही है यहाँ पे. देन अगेन ये हमने देख लिया. चार्ज इज नॉट लॉस्ट इफ प्लेट इज पॉजिटिव. व्हाई दिस व्हाई जनरेटेड एट दैट टाइम. इस व्हाई का आंसर देने के लिए वी हैव थॉमसन इन द हाउस. सो व्हाट द थॉमसन ऑब्जर्वेशन. थॉमसन को वी नो अबाउट हिज contribution in the field of theoretical and particle physics, and basically the discoverer of electron we will consider J.J. Thomson. ठीक है. So he has suggested that the leak charge is electron. Basically negative charge वाली plate ही जो है discharge हो रही है, which means negative charge is moving somewhere, isn't it? It being leaked because of the presence of ultraviolet ray. So ऐसा क्यों हो रहा है? Because अभी मैं आपको हिंट देता हूँ. देखो, ये एक पार्टिकल की तरह हम इसे ट्रीट कर रहे हैं और ये एक वेव है. ठीक है. तो या तो इलेक्ट्रॉनिक वेव या फिर अल्ट्रावायलेट रेज जो वेव है वो पार्टिकल है ना. यही तो पॉसिबिलिटी. भाई या तो इलेक्ट्रॉन वेव हो जाए तो एक वेव ने दूसरे वेव पे सुपर इम्पोज किया होगा, तो इसलिए ये डिस्प्लेस हो रहा है. या तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ. या फिर ऐसा हो सकता है कि दिस अल्ट्रावायलेट रे इटसेल्फ इज अ being a stream of particles. So one of the particle is hitting to the electrons and they are electron is emitting out. That would be the possibility. Now, next is the Planck's quantum theory. Then Planck has observed all of this. Okay, this is happening in my physics department. Let's me give a conclusive theory about that. So Planck's quantum theory says that light is not specifically a wave. I'm describing it in my words. Light is not specifically a wave. It's a stream of very, very, very small particles, which is termed as photon. Or in terms of quantum theory, or in terms of energy, it has said that light do not travel in the continuous stream. Light is not a continuous stream. Like you open up the tap, आप पानी पीने भी जाते हैं तो वहां पे टंकी होती है ना, टैप. आपने उसे ओपन किया तो दैट फ्लो इज कंटिन्यूअस. क्योंकि एक भी ऐसा मोमेंट नहीं है जहां आप कह दोगे कि यहाँ पे वाटर नहीं है. बट इफ यू जस्ट टर्न दैट टर्न ऑफ दैट टैप और उसे उस स्टेज तक टर्न ऑफ कर दो कि सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आए, देन दैट फ्लो इज डिसकंटिन्यूअस. प्लेस टॉकिंग अबाउट दैट द सेकंड केस आई हैव डिस्कस्ड कि light is not a continuous stream. It is not the tap open and water comes. It's just the drop by drop. It comes in terms of small packages.
and those packets is of energies packet. ठीक है, so light is a energy, is a form of energy which flows discontinuously, and it comes to us or any surface in bunches of the packets of energy, and that packets of energy are termed as quanta. ठीक है, these packets of energy are called as quanta or photons. Got it? Suppose there is a hot body. I have told most of that what Planck has to say. So this is the body at any particular temperature, it will emit radiation. We know from thermodynamics and heat transfer. Now, but this radiation are not continuous radiation as shown below. देखो, we can say that okay, this is the particular radiation. ये radiation emit हो रहा है, light emit हो रही है basically. So this light is not continuous. ये ऐसा flow नहीं है. This is not the way. So which type of radiation it is? I have already told you. But let's just see. So this type of flow it is. Firstly, we will have a packet. Then there is a gap. Then again we have a packet. Then there is a gap. And then again we have a packet. So whatever is the wave, it travels in terms of packets of energy. ठीक है, and these packets of energy is called quanta. ठीक है, चलो. Anyone has any kind of doubt in this? If you have any kind of doubt, you can ask. No? Now, specifically Leonard's observation. So the photoelectric effect that we study is basically started with this, the Leonard, Heinrich and Leonard's observation. Okay, so basically these two physicists done the experiment on this photoelectric effect and give some conclusion or observations. This is Philip Leonard. So first of all, the first conclusion is that kinetic energy of the emitted electron depends on the light frequency, but not on the intensity. ठीक है, which means कैसे कलर की लाइट आ रही है ना, उस पर डिपेंड करेगा. लाइट कितनी तेज और डिम है, इस बात पे डिपेंडेंसी नहीं. ठीक है, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस और डिमनेस. ब्राइटनेस और dimness, and frequency is about color in visible light. Okay, so I have seen that for violet light the electron is being emitted when it is exposed to the surface. When green light is exposed to the surface, then also the electron is emitted. But when the red light is emitted or red light is may fall on the surface, the never the electron is being emitted, which means it does not dependent at how bright is the red color is. It depends on why it is red color. Okay, it depends on the frequency, because we know that the changing in the color change the wavelength, change the frequency. Violet color has the maximum Webge pattern, you can remember. Okay, red color has the minimum frequency. So this kinetic energy of the emitted electron will depends on the frequency of the light falling on it, or frequency of the wave, I will say that, falling on it, but not on the intensity of the wave. ठीक है, we will talk about it now. देखो, जो बेसिक क्लासिकल थ्योरी है वो इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि ऐसे हो रहा है. क्लासिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एक वेव है, अगर ये फिनोमिना एक वेव दिखा रही है तो ये सबके लिए इक्वल होना चाहिए, बट इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी नीड द क्वांटम थ्योरी देन. ठीक है, तो क्वांटम लेवल की अंडरस्टैंडिंग इसके लिए चाहिए थी. उसके बाद फिर आइंस्टीन है. ठीक है, और आइंस्टीन ने कंबाइन किया लेनार्ड ऑब्जर्वेशन और जो मैक्स प्लैंक थी, वो सब इन्होंने कंबाइन किया, एंड आफ्टर दैट इट हैज मेड द ऑब्जर्वेशन दैट लेनार्ड रिजल्ट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड by assuming that light of frequency nu contains packets of energy h nu, and these packets are nothing but the photon.
देखो जब हम स्पेशली लाइट के बारे में बात करते हैं, तो दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज फोटोन. अदरवाइज इफ वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ वेव, ठीक है, एनी पर्टिकुलर वेव, and that wave is not light, then that particular packets of energy is called as quanta. ठीक है. So all these theories and observation converged to the discovery of photon, and this is for visible light. ठीक है. Now we will talk about the electron emission. तो अभी हमने देखा बेस क्रिएट किया, दैट व्हाई द फोटो इलेक्ट्रो इफेक्ट इज हैपनिंग. ठीक है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड, वी frequently using this term in this lecture, and what was that? Electron emission. Now what it is? Okay, what is the electron emission? Now you have seen that this is a particular cross section of a material in which lots of free electrons are there, but what you are seeing that they are not coming out of the surface, they are hovering around inside it. Okay, although they are free, they are not bound, but they are restricted only in this region, this rectangular region, not out of that. Okay. Now we know that conductors यानी कि solids, especially metals, have the free electron, and those free electrons can travel within the body. ठीक है, they cannot leave the metal or the surface. ठीक है, they are free to move within the metal. अब ये फ्री क्यों नहीं? बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस. ठीक, तो इसलिए ये बाउंड है ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्सेस, कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ द आयंस. ठीक है. अनदर आयंस, व्हाट इट नाउ, how many times we can emit or we can make the emission of electron possible? The electron emission is nothing but the phenomena when electron absorb suitable energy and make their self make itself come out from the surface. तो किसी भी पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट या सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी यू विल प्रोवाइड, सूटेबल के साथ साथ सफिशिएंट भी आप मेंशन करो, sufficient energy we will provide, then it will absorb that energy and make itself come out of the surface. It can eject out from the surface. And that is why that zinc plate, negative zinc plate is discharging. Okay? Because ultraviolet rays giving them the proper sufficient energy to coming out, and they are absorbing that and coming out. Okay? But is this the only way? No. The way is thermoionic emission also. Thermoionic emission means देखो इसमें therm आ रहा है, thermal. Thermal means heat. So if you heat the surface of metal, then also the emission you can see that all the emission can happen. And you have seen that. Okay. In radiation, heat transfer, in radiation, we have seen that as the temperature increases, what will happen? The frequency or the vibration at the metallic level will increase. So firstly, what you will see, there is a the plate of, or even if you have seen the tungsten bulbs. So initially, if the light is dim, means lesser is the heat is producing there. So it will feel red. If you increase the electricity level, so the heat loss will also increase. So if that increases, which means the more heat is releasing there. ठीक है ना, more radiation is coming out, increasing the temperature. ठीक है. So in that case, energy released will increase, radiating energy. तो आप देखोगे कि वो पहले रेड होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे येलोइश, और येलोइश से फिर वो प्रॉपर व्हाइट हो जाता है.
एंड इफ यू गिव दिस फर्दर ऑल्सो, ठीक है ना, सॉरी, रेड, येलो, एंड देन वायलेट, एंड देन बिकम व्हाट, वाइट, ठीक है। सो इट इज बिकॉज थर्मो इमिशन, सुटेबल हीटिंग से भी आप इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सकते हैं। फील्ड इमिशन बाय अप्लाइंग प्रॉपर strong electric field, and that we will use in the case of photo electric effect. Electric field हम वहां भी यूज करेंगे, but by applying the very strong electric field of the order of 10 raised to the power 8 volt per meter, वो ये हमने एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया था बताओ? कैथोड रे में। कैथोड एक्सपेरिमेंट में हम यही करते हैं, फील्ड इमिशन, ठीक है, कैथोड रे। यहीं से ही हमें पता चला था कि कैथोड रे जैसी भी कोई चीज है। कैथोड रे इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स। The fourth, third is photoelectric emission. फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन माने बाय द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, इफ यू फॉल द लाइट, if you make the light falling on a surface with a suitable frequency, the electron will be coming out, and we have seen in the case of ultraviolet rays, and in the case of violet, green and yellow, ठीक है। Now there is also one more emission is there, and which is termed as secondary emission। सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन को आपने लेजर्स में आप ज्यादा देखोगे, ठीक है ना, लेजर्स। जस्ट अ सेकेंड, इमिशन, देखो सेकेंडरी इमिशन में होता क्या है कि आपने किस इन तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज किया, यू हैव यूज वन ऑफ द मेथड आउट ऑफ दिस थ्री, ठीक है, मेंशन, एंड यू मेक द इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जेटिक, कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज आपने कर। इफ दिस इलेक्ट्रॉन हिट्स विद द अनदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, और ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ गया सरफेस से, so this particular emission is secondary emission because it is not directly happening, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है इसने डायरेक्टली एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं की, so this particular type of emission is secondary emission। Any doubt guys? Now very important term is work function। अभी वर्क फंक्शन से आप समझोगे कि why the only violet color or only green color is emitting out the electrons, not the red color. So that answer is in this work function. Now let's say this is a potassium metal and these are the positive charge and these are the free electrons. If you see these stars, these are the free electrons bounded with these positive charge and free to move within the metal. Potassium is a very reactive metal by the way, है ना, it's alkali. Now blue light has come. This is the packets of blue light of energy. Green light is come and it is absorbed by one of the free electron, and then electron emission is possible for both the cases. In the previous one, just a second, if the blue light is also coming, then also the emission is happening, ठीक है। देखो electron is emitted, and when the green light is coming, then also the emission is happening. But what about when red light is coming? When red light is coming, there is no emission, ठीक है, nothing happens. So here come the interesting part, that why is it, and that is explained by this work function. So photo emission, this is photoelectric emission, not electric we are mentioning it, photo emission only. So this photo emission occurs with blue and green light, not but not the red, ठीक है। which means metal क्या कर रही है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पार करने के बाद ही, अभी मेरे पास एक
ग्रीन कलर का पैकेट आ रहा है और एक ब्लू कलर, दोनों में मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज रहा हूँ, लेकिन जैसे ही रेड का आ रहा है तो मैं नहीं, विच मीन्स समथिंग इज देयर, सम लेवल इज देयर, जिसे ग्रीन और ब्लू क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर ले जा रहे हैं, बट रेड इज नॉट क्रॉसिंग दैट लेवल। कैन वी से सो? यस वी कैन। सो वर्क फंक्शन is nothing but that level, and that is decided by the metal itself. ठीक है ना, but because ultimately the light is falling on the metal surface, so the minimum energy required by an electron to escape from the metal at the surface of the metal, ठीक है ना, it is called the work function of the metal. अभी देखो यहाँ से सब कुछ क्लियर है, यानी कि मेरा जो ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है, दैट इज फुलफिलिंग दिस मिनिमम एनर्जी कंडीशन, बट रेड कलर इज नॉट। ठीक है, और यहां से आप वो भी लिंक कर सकते हो, अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर इज हाइयर, दैट इज व्हाई एनर्जी इज हाइयर ऑफ दैट पैकेट, एंड दैट इज व्हाई इट इज क्रॉसिंग दिस मिनिमम एनर्जी लिमिट, बट रेड कलर हैविंग मिनिमम frequency which means minimum energy, and that is why it is not crossing the level of minimum energy required. ठीक है, so work function is nothing but the energy itself, but what kind of energy? Minimum energy that we need to make an escape of the electron from the metal surface. ठीक है, it is denoted by phi naught and measured in electron volt. देखो 1 electron volt unit हमेशा याद रखना, it is 1.6 to 10 raised to the power 19 joule. ठीक है, and this is also termed as 1 electronic volt. Now the work function depends on the properties of metal and nature of its surface. सरफेस रफ है कि शाइनी है, मेटल कैसी है, ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव मेटल है, अल्कली है कि अल्कलाइन है. So all of these dependency will be there for work function. So this short or this particular table is from NCERT. If you go through your NCERT, you will find that same table there. So in this, you can say the CS, which is cesium, having a work function of 2.1. When you move further downward, you are moving. PB, I think lead na. So for lead, it is 4.25, and for PT, which is platinum, it is 5.65 electron volt. ठीक है, which means cesium is having the minimum work function, and it is varying as the metal varies. देखो इसका मरकरी के लिए कुछ अलग है, कॉपर के लिए अलग है, एजी यानी कि ये सिल्वर होती है, सिल्वर के लिए अलग है, मोबिडियम के लिए अलग है, सी ए कैल्शियम के लिए अलग है ना, तो हर किसी मेटल के लिए दिस इज डिफरेंट, which means work function is the property of the metal and metal surface itself. ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखना, मिनिमम और मैक्सिमम किसका होता है, तो मिनिमम है सीजियम का और मैक्सिमम है प्लेटिनम. ठीक है, नाउ व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? अब देखो अगर मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम एक लेवल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी तो होगी, आफ्टर दैट वी कैन इमिट इट आउट, और तभी फॉर दैट रीजन ऑल्सो this blue color and green color is capable of doing that emission, but the red color is not, because there is, if there is a minimum energy condition, energy is nothing but related to frequency, so there is a minimum frequency condition also, and each color has a different frequency, so red color is not meeting that frequency that we required to emit out the electron. It's very simple. Okay, don't need to remember the definition, remember the concept. Okay, if you just remember na कि there is a certain frequency above which I can only emit out the electron, then you can remember the concept of threshold frequency. Okay, that is the minimum and frequency we required or a metal can possess. ठीक है, below which there is no electron emission can happen, whatever the intensity, how brighter is the light. ठीक है, so when the frequency of the incident light is smaller than a certain minimum value, that is threshold, the electron emission does not take place. So वोयलेट के लिए ये हो रहा है, ग्रीन के लिए हो रहा है, बट इसके लिए नहीं हो रहा, रेड के लिए. ठीक है,
हालांकि वी आर डिस्क्रिमिनाइजिंग हियर द रेड लाइट, बट व्हाट वी कैन डू. So threshold frequency is the minimum frequency depends on the nature. The minimum frequency that we require to emit out an electron, and it depends. Although again, that minimum energy is required for what? देखो मेटल टू मेटल चेंज हो रही है, इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द इमीटर प्लेट पे डिपेंड करेगी. और इमीटर प्लेट क्या है? इमीटर प्लेट इज नथिंग बट द मेटल इटसेल्फ. ठीक है. सो आप देख सकते हो कि मेटल लाइक जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा कॉज इलेक्ट्रॉन इमिशन ओनली टू द अल्ट्रावायलेट रेज. पहली स्लाइड हमने देखा था अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ये डिस्चार्ज हो जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे होंगे एनर्जी और इमिट आउट हो रहे हैं, इसलिए ये डिस्चार्ज हो रहा है. बट यही काम विजिबल लाइट नहीं कर पा रही. इसका मतलब है कि विजिबल लाइट के पास जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी दैट अ विजिबल लाइट कंटेन्स इज नॉट सफिशिएंट. ठीक है ना, टू मीट द थ्रेशोल्ड. ठीक है. तो यहाँ से ही आप कह सकते हो सब अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अल्कली मेटल है. पोटेशियम, सीजियम एंड रुबिडियम आर सेंसिटिव इवन टू द विजिबल लाइट. तो अब इन्हें विजिबल लाइट में रख दोगे तो खाली पड़ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. एंड ऑल्सो रुबिडियम की बात करें तो ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है ना. चलो, अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ आप. फोर स्टूडेंट इज देयर, थ्री है, एक मैं भी. हरीश, क्रिस्टीना, प्रियदर्शनी एंड भगत. Till now, any kind of doubt if you are having, you can ask right now. Otherwise, answer this question. Photoelectric emission occurs only when the incident light has more than a certain minimum. So, what is that? Minimum intensity, power, wavelength और frequency. जेई मेन का क्वेश्चन है ये. जेई मेन ऐसे मजाक भी करता है ना. मजाक ही तो है ये क्वेश्चन, अगर किसी ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है. ठीक है. क्रिस्टीना, वॉइस इज ऑडिबल टू यू राइट नाउ? ओनली भगत हैज आंसर. So we have discussing it that the frequency is the only factor. But if minimum frequency is not crossed, the electron will not emit, and the minimum frequency is threshold frequency. Got it? Very good, Harish. चलो, अभी तो हमने theoretical aspect पे बात कर ली. Let's talk about the experimental base of photoelectric effect. So let's just do what is the photoelectric effect. First of all, the emission of the electron emission due to the presence of light rays. Okay, so that emission of electron is nothing but the photoelectric effect. ठीक है, the phenomena of electron emission from the metal plate is called the photoelectric effect. और उसके लिए जो responsible factor होगा that is photon. ठीक है, ये मेरी मेटल प्लेट है, ये लाइट रे आई और ये इलेक्ट्रॉन गया इधर. ठीक है, मीट हो गया, एब्जॉर्ब किया एनर्जी, थ्रेशोल्ड को मीट किया एंड दैट इट इज इमिटेड आउट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के भी. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कैन बी आस्क. जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है ना, दैट इज वेरी इंस्टेंटेनियस. वेरी इंस्टेंटेनियस है, विच मींस देर इज नो टाइम लैग. अगर किसी इलेक्ट्रॉन को थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी मिली तो जो इमिशन होगा वो इंस्टेंट होगा एकदम से. देर इज नो टाइम लैग. ऐसा नहीं होगा स्प्रिंग की तरह यू आर कंप्रेसिंग और यू स्ट्रेचिंग, इट इज getting stretched or it is getting compressed at a certain distance, and then how, then after that the spring force start applied. No, this is like instantaneous, छूमंतर एकदम से. ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और उधर वो इमिट आउट द थ्रेशोल्ड कंडीशन में. तो जो टाइम लैग होता है 10⁻⁻⁹ से भी कम होता है. ये क्या है? नैनो सेकेंड. 1 नैनो सेकेंड से भी कम. ठीक है.
ये तब भी हो सकता है, देखो इससे तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है बार बार, इवन व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली है गए ना, एक्सीडिंगली डिम। डिम का मतलब क्या हुआ, हमें इंटेंसिटी तो कम करो, फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज करो, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखो ये इसका सेटअप है पूरा, ठीक है, यहाँ एक एक चीज को समझेंगे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ग्लास ट्यूब के अंदर सब कुछ हो रहा है, दैट इज अ ग्लास ट्यूब, वैक्यूमेटेड ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम होता है इसके अंदर। वैक्यूम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे एयर भी होगी, और जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होंगे ये एयर से टकरा जाएंगे और हमारी स्टडी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब है, ठीक है। उसके बाद ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, सी, इसे हम इमिटर प्लेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई इमिटर, क्योंकि ये इमिट कर रही है लाइट, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसलिए हम इसे इमिटर प्लेट बोलते हैं। सामने एक रिसीवर है, इसे कलेक्टर बोलते हैं, दिस इज द कलेक्टर प्लेट। लाइट जो फॉल करेगी ना इमिटर प्लेट में फॉल करेगी, light will fall on the emitter plate, after that it makes the electron emit out, the collector will collect the electrons, and we have joined through a circle, sorry circuit, और यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ आ रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाना चाहेंगे, अब ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे। So electron will also feel the additional force in this direction. And if the electron comes here, it will make through this circuit, and circuit will complete. The current will be showing here. ठीक है, in the galvanometer, because the measurement is very very less. Milliampere में we are measuring. ठीक है. Now the emission of the electron cause flow of electric current in the circuit, and that electric current is termed as photoelectric current. ठीक है, उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज वेरीड बाय चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ द लाइट, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज वेरीड बाय चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द मीटर। तो देखो यहाँ पे मैंने एक, ये मेरे पास एक लाइट रे का सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये मीटर प्लेट पे गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इंटेंसिटी को घटाने बढ़ाने के लिए मैं इस पर्टिकुलर सोर्स को मोमेंट दे सकता हूँ। आई कैन मूव इट अवे फ्रॉम द सोर्स एंड आई कैन मेक इट नियर बाय टू द सोर्स, सो दैट्स हाउ आई वेरी द इंटेंसिटी। एंड टू वेरी द फ्रीक्वेंसी आई यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर। तो यहाँ पे मैं फिल्टर पेपर यूज करूंगा, कोई ब्लू कलर का फिल्टर होगा, कोई रेड कलर का। सो आई प्लेस इन फ्रंट ऑफ दिस इमिटिंग सोर्स ऑफ लाइट। सो जैसे मैंने अभी रेड कलर का लगा दिया, देखो तो यहाँ से कौन सी लाइट आएगी, रेड लाइट आएगी, रेस्ट अदर विल बी फिल्टर्ड आउट, ठीक ठीक है। सिमिलरली इफ आई यूज द ब्लू कलर हियर, अगर मैंने ब्लू कलर यूज किया तो ब्लू कलर की लाइट आएगी ओनली, रेस्ट अदर विल बी फिल्टर्ड आउट। सो how do I vary the intensity, by changing the distance of source and the emitter plate. And how do I change the frequency of the light falling on the emitter plate, by changing the filters, ठीक है। देखो अब देखो, इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना है तो कुछ फैक्टर्स होंगे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिन्हें हम कांस्टेंट या वेरी करा करके उनकी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करके वी विल स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। व्हाट आर दोस, तो फर्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, सेकेंड इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ए एंड सी। देखो, या तो मैं इंटेंसिटी को वेरी करा सकता हूँ रेडिएशन, ज्यादा डिम या बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और इसके बीच से वेरी कर सकता हूँ डिमर टू ब्राइटर। तो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन,
अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, इसे भी वेरी कर सकता हूँ। either I can increase the potential difference, reverse the potential difference, and then again increase it in the reversal order. ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी तो चेंज कर ही सकते हैं। रेड कलर यूज कर सकते हैं, रेड कलर की लाइट, blue color light we can use, green color light, different types of light we can use, different frequency we can use. And the next is nature of the material of the plate. We can also change the metal, na? Because in the case of potassium we have seen that potassium is sensible to the visible light also, while the other thing, on the other side, cesium, the metal cesium is only show the emission in presence of UV rays. It is not showing any emission in the presence of light ray, visible light. So by changing the matter means changing the metal plate. We can also see the significant change, what is happening. Okay, how do the electric current varies, and then the phenomena that we measure here, the electric current. ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं और इस पैथ को फॉलो करके सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, विच मीन्स वे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वी आर गोइंग टू सी बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ दीज फोर फैक्टर्स। ठीक है, and this thing we will be doing in the next class. I think this is pretty much clear to you. Now I'm sharing a poll with you. Just answer in that poll, and if you have any kind of doubt you can ask right now. Okay, now, but to mark your attendance, please do participate in that poll. Otherwise, if you do not have any kind of doubt, the lecture is being over. Thank you so much for being attentive and being responsive. Bye bye and take care.